अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन। वन मैन वन वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है, और हमने क्लियरली दिखाया है। વોટ ચોરીના મુદ્દે આજે સંસદમાં જબરજસ્ત બબાલ એટલે સંસદની બહાર વિપક્ષના તમામ નેતાઓએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યા, વોટ ચોરીના મુદ્દે હલ્લાબોલ કર્યા, પછી પોલીસે એ લોકોની અટકાયત કરી। વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીથી લઈને પ્રિયંકા ગાંધી અને બધા લોકોની અટકાયત કરી અને એમને પોલીસ લઈ ગયા। અટકાયતથી છૂટ્યા પછી 2 વાગ્યા સુધી તો સંસદ એમ પણ સ્થગિત કરી દેવામાં આવી હતી, પણ જેમ જ પોલીસ એમને લઈ ગયા એના પછી હોબાળો વધ્યો। એટલે ગાડીમાંથી જ્યારે રાહુલ ગાંધી બોલી રહ્યા હતા કે પછી પ્રિયંકા ગાંધી બોલી રહ્યા હતા, ત્યારે વિપક્ષના નેતા તરીકે આક્રોશ સાથે કહી રહ્યા હતા કે જ્યારે સત્તા સામે સવાલ કરવામાં આવે છે ત્યારે નેતાઓ સાથે આવું જ કંઈક થતું હોય છે। સંસદની બહાર જે થયું એ બધાએ જોયું, એના પછી હવે ધીરે ધીરે બધા લોકો જેની અટકાયત થઈ હતી એમને છોડી દેવામાં આવ્યા છે। સંસદનું સત્ર ફરીથી 2 વાગ્યાનું જે છે એ શરૂ કરવામાં આવ્યું। 2 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરેલા એ સંસદના સત્રમાં હવે ફરીથી વોટ ચોરીના મુદ્દા પર ચર્ચા થઈ રહી છે। મલ્લિકાર્જુન ખડગે ઊભા થઈને બોલી રહ્યા હતા, ત્યારે જેપી નડ્ડા એમની સામે જવાબ આપી રહ્યા હતા, અને સંસદની અંદર જે થઈ રહ્યું હતું એના કરતાં વધારે રાહુલ ગાંધી, જેમણે આખો ઘટસ્ફોટ કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે હું પુરાવા સાથે જે રજૂ કરીશ, એટલે એમણે કહ્યું હતું કે 40 લાખ જેટલા વોટર્સ છે જે ફેક વોટર્સ છે, અને આંકડાઓ સાથે અને ડેટા સાથે કહ્યું હતું કે ઇલેક્શન કમિશન આવી રીતના જોલ કરી રહી છે અને ચૂંટણીઓમાં આવા જોલ થતા હોય છે। એ રાહુલ ગાંધીની અટકાયત પછી શું થયું? રાહુલ गांधी હવે સંસદ પહોંચ્યા છે, સંસદ આવતાની સાથે જ પોલીસે અટકાયત કરી પછી શું કર્યું હતું એ સાંભળો તમે। हाँ नहीं, देखिए हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई, और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। वन मैन वन वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है, और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि वन मैन वन वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, वन मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है, और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप नोटिस का जवाब आप दे दीजिए। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है, और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है।